गुड मर्निंग मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই আজি আকৌ আহিছোঁ তোমালোকৰ ওচৰত ক্লাছ 8ৰ হিন্দী কিতাপৰ পাঠ 11ক লৈ। আজি এইটোৰ বিষয়ে আমি ভালকৈ জানিম। তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাই ল'বা আৰু চাই কেনে ইয়াৰ মাজত মই কিছুমান কোৱেশ্চন কম, ইয়াৰ এনসাৰো দিম, সেইবিলাক তোমালোকে তোমালোকৰ কপিত তুলি ল'বা। ঠিক আছে, তেন্তে আৰম্ভ কৰিম। भारत की भाषिक एकता अर्थात नामटोर पৰাই আমি বুজি পাওঁ যে ভাৰতৰ ভাষা সেই ভাষাৰ মাজত যে একতা আছে সেই একতাক বুজাইছে। एक सुंदर सी फुलवरी में जब भिन्न भिन्न प्रकार के अनेक फूल खिले हुए होते हैं तब दिखने वालों को बहुत खुशी मिलती है। अर्थात এখন সুন্দৰ বাগিচাত যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল আমি দেখা পাওঁ তেতিয়া সেই ফুলবোৰ দেখাত আমাৰ খুব ভাল লাগে। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है। आमार देखत बहुत धৰণৰ भाषा কোৱা হয়। भाषाओं की इस फुलवरी में खिले फूल के समान हर एक भाषा का अपना अपना अनोखा रूप, रंग और सुगंध होते हैं। भाषार মাজতো কি হয়, প্ৰতিটো ভাষাৰ এটা এটা অস্তিত্ব থাকে আৰু সেই অস্তিত্ব এটা নতুন ধৰণৰ সৌন্দৰ্য প্ৰদান কৰে মানুহৰ। जैसे हर एक फूल फुलवारी की सुंदरता में चार चांद लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ता है, वैसे ही भारत की बहुभाषिक संस्कृति को इनकी हर एक भाषा से परिपुष्ट मिलती है। যেনেকৈ এখন বাগিচাত বিভিন্ন ৰকমৰ ফুলবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ শোভা বঢ়ায়, ঠিক তেনেদৰে এই ভাৰতবৰ্ষতো বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা মানুহে কি কৰে, এই ভাৰতবৰ্ষটোৰ সংস্কৃতিৰ এক শোভা বঢ়ায়। विभिन्न भाषाओं की विभिन्न लोककथाएं, लोकगीत, मुहावरे, कहावतें, विविध विधा तथा साहित्यिक रचनाएं आदि मिलकर ही भारत की सामाजिक संस्कृति को विशिष्ट बनाती है। ভাৰতৰ সংস্কৃতি তেতিয়াই সম্পূৰ্ণ হয় যেতিয়া বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষা, বিভিন্ন ধৰণৰ সংস্কৃতি আহি একেলগে গোট খায়। विविधता में एकता भारतवर्ष की एक प्रमुख विशेषता है। আৰু এই বিভিন্নতাৰ মাজতো যে এটা একতা লক্ষ্য কৰা যায়, সেই একতাটোই হৈছে ভাৰতৰ মূল লক্ষ্য, ভাৰতবৰ্ষৰ মূল লক্ষ্য। भाषा के क्षेत्र में भी यही विविधता परिलक्षित होते हैं। আৰু ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো একে ধৰণৰ বিভিন্নতা আমি দেখা পাওঁ। যেনে ধৰা কেতিয়াবা বঙালী, কেতিয়াবা অসমীয়া, কেতিয়াবা হিন্দী, কেতিয়াবা ইংলিছ, এনে ধৰণৰ ভাষা, বহুতো ধৰণৰ ভাষা ইয়াতে কওঁ। भारत में बोली जाने वाली 1500 से भी अधिक भाषाएं में से 22 भाषाओं को भारतीय संविधान ने 8ম अनुसूची में स्वीकृति दी है। তেতিয়া হলে আমি এটা কোশ্চেন পাম, ভাৰতত কিমান ভাষা আছে? ভাৰতত প্ৰায় 15,000 মান ভাষা আছে আৰু ইয়াৰ মাজত স্বীকৃতি দিয়া হৈছে মাত্ৰ 22খন ভাষা। আৰু এইবোৰৰ মাজত আছে হিন্দী, অসমীয়া, বড়ো, बांग्ला, उड़िया आदि। ऐसे ही संविधान में स्वीकृति कुछ भाषाएं हैं और बहुत आसे, परंतु ऐसी अनेक भाषाएं हैं जो अब तक संविधान में सन्निविष्ट नहीं हुई है। किंतु एने धৰণৰ বহুতো ভাষাও আছে যিবিলাক এতিয়ালৈকে আমাৰ সংবিধানত সংশ্লিষ্ট মানে সংবিধানত যাই পোৱা নাই, মানে স্বীকৃতি দিয়া নাই তাক। परंतु ये जो अलग अलग भाषाएं के बोलने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं, क्या उन्हें एक दूसरे को समझने में मुश्किल होती है? हाँ, मुश्किल होती है जरूर। কেতিয়াবা কি হয়, এটা ভাষাৰ মানুহে আন এটা ভাষাৰ মানুহক বুজি পোৱাটো যথেষ্ট কষ্টকৰ হৈ পৰে। আৰু তেতিয়া সেই भाषाटुक आमी केनेके बुझी पाऊँ? पर इन भाषाओं में कुछ ऐसे तत्व समाहित है जिनके कारण एक भाषा बोलने
वाले लोग दूसरे भाषा बोलने वाले लोगों की बातें कुछ न कुछ तो समझ ही लेते हैं, किंतु आमार भाषाबिलाकत এনেধৰণৰ এটা বিশেষত্ব আছে বা বিশেষত্ব লক্ষ্য কৰা যায় যে সেই ভাষাৰ মাজত এটা বিভিন্ন ভাষাৰ এটা মিল আছে আৰু সেই মিলৰ বাবে সেইটো মানুহে কি কৈ আছে না কৈ আছে সেইটো আমি বুজিবলৈ সক্ষম হওঁ, অতি সোনকালেই বুজি পাওঁ। যদিও আমাৰ সেই ভাষাটো কোৱা কষ্টকৰ হয় কিন্তু বুজি পোৱাত আমাৰ কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহয়। उनकी भाषा में भी कुछ कुछ जानी पहचानी सी लगती है। इन तत्वों ने ही भारतीय भाषाओं को एकता के सूत्र में बांध रखा है। और এই ভাষাবিলাকে কিছু কিছু ভাষাবিলাকৰ মাজত কিছু কিছু চিনাকি যেন ভাষা আছে, যাৰ জৰিয়তে আমি এটা ভাষাৰ পৰা আন এটা ভাষালৈ অতি সহজেই বুজিব পাৰোঁ। रामायण महाभारत की कथाएं तो तुम लोग जानते ही होंगे। आज से हजारों वर्ष पहले संस्कृत भाषा में ये महाकाव्य लिखे गए थे। तेंते क्वेश्चन আহিব পাৰে সংস্কৃতি ভাষাত লিখিব পৰা দুটা গ্ৰন্থৰ নাম লিখা, আৰু সেই গ্ৰন্থ দুটা হ'ব रामायण আৰু महाभारत। संस्कृत भाषा में ही विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद की रचना हुई। আৰু এটা গ্ৰন্থৰ নাম কি বেদ। এই বেদটো আটাইতকৈ প্ৰাচীন গ্ৰন্থ আৰু এইটো লিখা হৈছিল সংস্কৃত ভাষাত। कालक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में फैल जाने के पश्चात संस्कृत भाषा का कुछ कुछ परिवर्तन होने लगी और इसके फलस्वरूप कालांतर में कई आधुनिक भारतीय भाषाएं जैसे हिंदी, असमिया, बांग्ला, उड़िया, मराठी आदि उत्पन्न हुई। তেনেহলে এই ভাষাবোৰ ক'ৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে? সেই সংস্কৃত ভাষাটোৰ পৰা উৎপন্ন হৈছে। মানে কালক্ৰমত মানে বহুত দিনলৈ পৰিৱৰ্তনৰ ফলত আহি আহি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষাৰ সৃষ্টি হৈছে, আৰু সেই ভাষাবিলাকৰ নাম দিয়া হৈছে হিন্দী, অসমীয়া, বাংলা, उड़िया, मराठी आदि। तो कहा जा सकता है कि आधुनिक भारतीय भाषाएं की उत्पत्ति मूलतः संस्कृति भाषा से ही हुई है। এতিয়া क्वेश्चन আহিব পাৰে আধুনিক ভাষাৰ উৎপত্তি ক'ৰ পৰা হৈছিল? তোমালোকৰ আনসাৰ হ'ব যে সংস্কৃত ভাষাৰ পৰাই হৈছিল। इसीलिए संस्कृत भाषा के अनेक शब्द और व्याकरण के अनेक नियम आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी प्राप्त होते हैं। इस रूप में भारतीय भाषाओं में एकता की झलक परिलक्षित होते हैं। আৰু এই সংস্কৃত ভাষাৰ পৰা গোটেইখিনি ভাষা অহাৰ কাৰণে কি হৈছে, সংস্কৃত ভাষাৰ কিছুমান ভাষা বা কিছুমান ব্যঞ্জন বা বৰ্ণ প্ৰতিটো ভাষাত লক্ষ্য কৰা যায়, আৰু সেই মিলটো থকাৰ বাবে প্ৰতিটো ভাষা বুজিবলৈ আমাৰ কি হৈছে, অতি সহজ হৈছে। संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण के आधार पर प्रांतीय भाषाओं में भी रामायण लिखे गए हैं। कंबन ने तमिल भाषा में रामायण का अनुवाद किया तो माधव कंदली ने असमिया भाषा में और तुलसीदास ने अवधि में रामचरितमानस लिखा। तेंते रामायण और बहुतो धरणे लेखा হৈছিল, विभिन्न भाषार माध्यमेरे लेखा হৈছিল। पूर्वोत्तर में अधिक संख्यक लोगों को बोलचाल और भाषा है असमिया। तार माने आमी जिटु ठाईत थाको अखम, हे अखमर भाषा हल मूल भाषा अखमिया। असमिया भाषा के जरिए ही होता है। उदाहरण के लिए नागालैंड की अनेक जनजातीय लोग का निवास है और उनकी भाषाएं भी अलग अलग है। आपसी संपर्क की सुविधा के लिए नागा लोग नागा जनजातीय भाषाओं के तत्व तथा असमिया के मिश्रण से बनी नागामीज भाषा का व्यवहार करते हैं। तेतिया এই অসমত কি হয়, বিভিন্ন ওচৰৰ যিবিলাক ৰাজ্য আছে সেই ৰাজ্যৰ মাজত এক মিল খাই নতুন এক ভাষাৰ জন্ম হয়। সেই ভাষাটোৰ নাম দিয়া হৈছে নাগামিজ। নাগালেণ্ড আৰু অসমৰ ভাষাক একেলগে মিলাই নতুন ভাষাৰ উৎপত্তি হৈছিল, তাৰ নাম দিয়া হৈছিল নাগামিজ। আৰু এইটো কি কাৰণে দিয়া হৈছিল? অহা যোৱাৰ সুবিধাৰ কাৰণে বা এইটো ভাষাৰ লগত মিল থকাৰ বাবে বা বুজিবৰ কাৰণে অসুবিধা নোহোৱাৰ বাবে এইটো কৰা হৈছিল। इसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश के लोग भी विभिन्न जनजातीय समुदाय में पारस्परिक संपर्क तथा आदान प्रदान के लिए नेफामीज
तथा हिंदी का व्यवहार करते हैं। ठीक এনেদৰে অৰুণাচলত মানুহেও কি কৰে নেফামিজ বুলি এটা ভাষা ব্যৱহাৰ কৰে যেটো হিন্দীৰ মাজতে পৰে। इस प्रकार के भाषा व्यवहार के कारण भाषाओं में एकता के तत्व समाहित हो जाते हैं। ইয়াৰ বাবে কি হয় ভাষাৰ যি বিভিন্ন ধৰণ আছে সেই ধৰণবিলাক প্ৰায় একে হৈ যায়, যাৰ বাবে মানুহৰ বুজিবৰ বৰ সুবিধা হয়। भारतवर्ष में जब मुसलमान लोगों का आगमन हुआ तब उनके साथ अरबी और फारसी भाषाएं भी आ गई। भारतत जेते मुसलमान मानुह आहिছিল तार लगत की হৈছিল अरबी और फारसी এই দুটা ভাষা আহি পাইছিল। इन भाषाओं के प्रभाव के कारण आधुनिक भारतीय भाषाओं में किताब, कलम, कागज, चश्मा, दुनिया आदि हमेशा व्यवहार में आने वाले अनेक शब्द के प्रचलन होने लगा। मुसलमानों के बाद भारत में अंग्रेज, फारसी, डच, पुर्तगाली आदि अनेक यूरोपीय जनजातियों के लोग आए और उन्होंने उपनिवेश बना लिए। इनके सानिध्य के कारण हमारी भाषाओं में इनकी भाषाएं के अनेक शब्द आ गए और धड़ल्ले से प्रयोग भी होने लगे। तेतिया मुसलमानर उपरेও আৰু ইংৰাজসকলেও আমাৰ দেশত তেতিয়া আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ ভাষাবিলাক কি আমাৰ মাজত সোমাই আছিল লাহে লাহে, আৰু যাৰ বাবে এই ভাষাবিলাক আমাৰ ভাৰতীয় মানুহে ব্যৱহাৰ কৰা আৰম্ভ কৰি দিছিল লাহে লাহে। हमारी भाषाओं में प्रयुक्त स्कूल, अलमारी, स्टेशन, साइकिल आदि यूरोपीय भाषाओं से आगत शब्द है। इन विदेशी भाषाओं से आगत शब्द के कारण आधुनिक भारतीय भाषाओं में एक प्रकार का संपर्क सूत्र बन चुका है। এতিয়া ইংৰাজী ভাষা আৰু ইউৰোপীয় ভাষা যিবিলাক আছিল সেইবিলাকৰ লগত আমাৰ ভাষাবিলাকৰ মাজত মিল খোৱা দেখা গৈছিল বা এতিয়াও দেখা যায়, যেনে স্কুল, আলমাৰী, ষ্টেচন, চাইকেল এইবিলাক ইউৰোপীয়ান ভাষা আৰু এইটো আমালোকৰ মাজত এতিয়ালৈকেও চলি আছে। আজি এইখিনিতেই সমাপ্ত কৰিলোঁ আৰু নেক্সট দিনা আমি ইয়াৰ পিছৰখিনিৰ বিষয়ে জানিম। এইটো বহুত ডাঙৰ দীঘল পাৰ্ট, এইটো একেদিনে কৰা সম্ভৱ নহয়, ভিডিঅ' বহুত ডাঙৰ হৈ যাব। ইয়াৰ বাবে পাৰ্ট কৰিম। তোমালোকে এটা কাম কৰিবা, লাইক আৰু ছাবস্ক্ৰাইব অৱশ্যই কৰি দিবা আৰু ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰবিলাক অৱশ্যই তুলি ল'বা।